Hello everyone, a very warm welcome to Insightnomics. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing absolutely wonderful. I'm Bhavna Singh. We'll learn economics together. Stay tuned with me. Let's start the topic for today. In this video, we are going to derive the Hessian demand functions or the compensated demand functions using the CES utility function. Okay. So we have been given a CES utility function, this one, and we have a budget function, this one, and we have to derive the Hessian demand function. And using those demand functions, we also have to derive an expression for the expenditure function. Okay. So start करते हैं. Usual equilibrium condition, that is MRS is equals to MUX by MUY, which is equals to price of X and price of Y. This is the equilibrium condition that represents the maximum satisfaction given the budget constraint or the minimum expenditure given the level of satisfaction. A rational consumer will follow this equilibrium condition. Where you will get this condition at the point of tangency between the slope of IC, that is represented by MRS, and the slope of budget line, that is represented by this price ratio. So we have to derive the MUX. MUX is the partial derivative of U with respect to X. तो हम लोग एक बार यहाँ लिख लेते हैं हमारा यूटिलिटी फंक्शन that is x half plus y half whole square. So इसका हमें MUX डिराइव करना है, x के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है. तो फिर इस केस में जब भी हमारे पास इस तरीके से फंक्शन रहता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो इस तरीके से होता है. जैसे कंसीडर दिस होल टर्म लाइक a, so a square. Here your a is equals to x and your n is equals to 2, and जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो इस तरीके से होता है x raised to the power n आगे आ जाता है, then n minus 1. ओके, तो अभी इसको फर्स्ट ऐसे सॉल्व कर. देयर आर टू स्टेप इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन. जस्ट वेट. So first step, consider this whole term as a, so it is a square, so you'll get this differentiation like 2a. Okay, so we can write it first 2a, and then it is the differentiation of utility with respect to x. So we have first we will have this differentiation, second we will differentiate this like x raised to the power half. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, then x 1/2 minus 1. So you can write it like this, 1/2 x 1/2 into x minus 1. तो x minus 1 में तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x half divided by x. ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ. सो फर्स्ट ये ओवरऑल टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, सो इट विल बी लाइक 2 आगे आ जाएगा एंड दिस होल टर्म्स रिमेन एज इट इज लाइक 2 minus 1, so this a. okay, and then we'll differentiate x raised to the power half. Okay, there are two steps involved in it. So differentiation of x raised to the power half is 1/2 x 1/2 minus 1. ओके, एंड आपका जो भी है x हाफ ये एज इट इज रहेगा. टू माइनस 1. ओके, एंड मैं एक बार और बता देती हूँ, शायद से आपको कंफ्यूजन हो. कंसिडर दिस होल टर्म एज a. सो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंसिडर दिस होल टर्म एज a square. First differentiate this a square, so you will get 2a. First differentiation. Now expand this a like this, x half plus y half. Now you have to differentiate with respect to x. So x raised to the power half, 2 तो पहले से ही है, अभी 1/2 आगे आ जाएगा, x
1/2 -1, ओके। बाकी जो a है आपके वैल्यू x 1/2 + 1/2 एज इट इज रहेगा। So you will get this equation by differentiating this particular utility function. So let me box this. तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट आउट विद x raised to the power half -1 x half plus y half, ओके। एंड आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो x half divided by x into x half plus y half, okay. This is the expression for the marginal utility of x, okay. Now we'll derive for mu y. Like similarly for mu y, we'll take the partial derivative of utility function with respect to y. So again we'll consider this whole function as a and we'll solve it in that way only. So in this case we are solving with respect to y. So we'll get the same thing like 1/2 y 1/2 -1 एंड बाकी जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा 1/2 प्लस this, and again 2 से 2 cancel out, you are left out with y 1 -2 -1 x half plus y half, एंड आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो y 1/2 divided by y x half plus y half. So this is the final expression for marginal utility of y. अभी इसको पुट करते हैं हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो mu x हमारा क्या आया था x half divided by x 1/2 plus y 1/2 this, and y क्या था 1/2 by y x 1/2 plus y 1/2। तो जैसे कि मैंने विच इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, ओके। तो अभी जैसे कि मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो हम लोग ये y वाली वैल्यूज को ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएगी ये। सो विल गेट x half divided by x 1/2 plus y 1/2, and then this y divided by y 1/2 and this x 1/2 plus y 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, ओके। Just wait, I think I'm making some mistake. तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी बता के रखा है, जैसे x है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x half, सिमिलरली फॉर y half हम लोग वही करेंगे, which is equals to price ratio. So x half divided by x half into x half
y half into y half divided by this y half. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. You will left out with y half x half equals to price of x price of y. अभी y के टर्म्स में लेके जाते हैं इस वैल्यू को. y half equals to price of x price of y into x half. ओके, अभी ये क्या है, हाफ है, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे जो 1/2 है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये चले जाएगा न्यूमरेटर में. या वी कैन स्क्वायर बोथ द साइड इन सिंपल स्क्वायर बोथ साइड. So you will get 1/2 square price of x price of y square x 1/2 square. So this half, this cancel out, this will cancel out, you will get y is equals to price of x price of y square and the x. This is the final equation. From by using this equation we are going to derive our demand functions. We got this particular equation using that equilibrium condition, and now we have to put this y into the utility function to derive an expression for the demand function. Okay, so we have to put this. So put this equation 1, that is y into utility function to get x star, or you can also call it xc. We'll denote the action or compensated demand function using this c term. So we have this utility function x half plus y half over a square. Okay, we have to put the y into it. So u x half plus what is the expression for this? Price of x price of y square into x. This whole term is half and this whole term is square. Okay, हम लोगों ने केवल जो x है y है उसको सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे. Now we will solve it. Here we have square, so we have to derive this whole equation in terms of x. तो हम लोग इस जो स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड replace करेंगे. So we will get 1/2 here, and we have left out with x half plus price of x. Individually this is price of x and price of y का whole square into this 1/2, this one, and we have this x 1/2. So this will cancel out and you will left out with x half plus this x half into this price of x and price of y. We have x in both the term, common ले लेंगे इसको, and we left out with 1 plus price of x price of y. Yeah. Now अभी हमें x के टर्म्स में लिखना है, तो ये होल टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा. x half is equals to u half and this 1 plus price of x price of y, like this. तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x half u half, ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा. ओके,
1 plus price of x, price of y minus 1, this whole term. Okay, now ये इस साइड हाफ है, इस साइड दोनों साइड हाफ हाफ है, हमें x के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, सो वी विल स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर both the sides. So we will get x 1 by 2 whole term square u half this whole term square plus sorry into 1 plus price of x, price of y, and this is also square. So this minus 1 square will be minus 2. Okay. So this two will cancel out. You will get x is equals to u 1 plus price of x, price of y minus square. Okay, this is an demand function or an Hessian demand function for this type of utility function. This is an expression for that. Okay, so we have derived the Hessian demand function for good x. Now we will derive the expression for Hessian demand function for good y. So like we have this equation, price of x, price of y square into x, right? So we'll manipulate in terms of x. We will get price of y, price of x square into y. Okay. Now we'll put this x, this equation with respect to x into our utility function. So like we have to replace this x. In terms of x, we'll write this equation. Price of y, price of x square into y, and this whole term is half plus y half, and this whole term will be in a square. Okay, solve करते हैं इसको. Again same procedure, price of x, this is in square, and a square into 1 by 2 will cancel out, and you left 1 by 2 plus y 1 by 2. So again हम लोग y कॉमन ले लेंगे, and we'll get this price of y, price of x plus 1. We can remove this bracket, and we have this just to it yeah, 1 by 2. ये स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो ये हाफ डिनोमिनेटर में चले जाएगा, सो विल गेट u हाफ लाइक दिस. अभी हमें y के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, तो y के टर्म्स में लिखते हैं इसको. y 1 by 2 equals to u 1 by 2, and this will be in a denominator plus 1. Okay, अभी we'll square both the sides, square both the sides to get an expression for y. So when we square both sides, this half will cancel out. You will get y is equals to u divided by this price of y, price of x plus 1 स्क्वायर. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दिस इज एन एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर good y for the demand function. This is the action demand function for good y. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ y, प्राइस ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. So we'll get this final expression for our Hessian demand function with respect to good y. So we have derived the Hessian demand function for both the goods.
Now we are using this demand function to derive an expression for the expenditure function. So in order to derive an expenditure function using this demand function, we have to put this demand function xc and yc into our budget function simultaneously. Okay. So here we have our budget function. Now we have to replace here x and y with xc and yc. Your this is an expression plus 1 minus square. This is for price of x, sorry, x. And now similarly, this price of y, sorry, price of y, price of x plus 1 minus 2. This is an expression for y. अब इसको simplify करते हैं. So here it is like that. You have u in both the terms. Okay, तुम लोग u common ले लेंगे. And now we'll put this in one bracket. Price of x plus 1, price of y minus 2, sorry, plus price of y divided by price of x plus 1 minus 2, this term. So we will get this particular function for our expenditure. So this is an expression for our expenditure function. This is the final equation. हम लोग इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. बाकी आपके पास जब भी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड यूटिलिटी, आपको सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुट करना है. यू विल गेट द एक्सपेंडिचर फंक्शन आउट ऑफ इट. Okay, this is the general derivation for the expenditure function using this particular utility function. So we have done. अगर आपको confusion है तो आप comment section में पूछ सकते हैं. Thank you so much for watching this video. If you find our content insightful and productive, make sure to share, subscribe, and hit that like button. That will help us to grow and learn together. If you had any suggestions, queries, please do comment us and you can join us on our Telegram channel. Thank you. मिलते हैं next video में.